Hi, this is Arti. In this video, I am going to show you the MCQ of mechanics of solid of last semester, which was held 18th of August 2017, and this MCQ was held at Manipal University, Jaipur, by the Department of Civil Engineering. Okay, so you'll see all 10 questions of this paper, and there are three sets of this paper. Some questions, very few questions are different, but most of the questions are same in all the papers. So I think I should start. So this is of, I think, 30 minutes maximum time. ठीक है? Time duration and 10 marks question examination. So question number 1 is that which of the following statement is correct? Options are: a force is an agent which produces motion, a force is an agent which stops motion, a force may balance a given number of forces acting on a body, both A and B. So definitely A and B should be, both the answers should be. So D is the best possible answer. Okay, बिकॉज ए फोर्स एजेंट हो सकता है जो मोशन प्रोड्यूस करे और मोशन को रोक भी सकता है, तो कुछ भी हो सकता है. If a number of forces are acting simultaneously on a particle, then resultant of these forces will have the same effect as produced by all the forces. Okay, if the number of forces acting simultaneously, सारे के सारे forces साइमल्टेनियसली एक्ट कर रहे हैं किसी पार्टिकल पे, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा, उसका जो इफेक्ट होगा वो उतना ही होगा जितना कि सारे फोर्सेस का इंडिविजुअली होगा. सो जिसका मतलब होता है, द ऑप्शंस हैं, दिस इज नॉन एज नंबर 1 प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस फोर्सेस, गलत आंसर. प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस, नहीं है. प्रिंसिपल ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, दिस इज द क्लोजेस्ट वन ऑप्शन, so I can see is the best possible answer, none of above. So C is the answer. Okay, it defines similar definition. Okay, so principle of physical independence of force is nothing but it is a Newton's third law of motion. It defines the same. Principle of transmissibility of forces, again, if force can be transferred from one location to other location, but effect on the body is remains same. By either you apply force at this location or at this location, the body will move in same direction for the same distance if the orientation of load applied and magnitude applied is also same. So option number 3, question number 3, sorry, a point force is an idealization of a real force that is distributed over a small area of application. So correct है, a force is an idealization. तो फोर्स तो कभी बहुत छोटा नहीं हो सकता, लेकिन एक छोटे एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, तो हम लोग मान लेते हैं कि ये पॉइंट लोड है रिलेटिव टू द एरिया अवेलेबल. सो ओके, लाइक कोई कॉलम है बहुत बड़े राफ्ट पे रेस्ट कर रहा है, सो यू वी कैन कंसीडर इट लाइक ए पंचिंग एंड पॉइंट लोड. ओके, बट इसका एरिया काफ़ी ज़्यादा होगा, 2 मीटर तक डायमीटर हो सकता है, बट वी कंसीडर इट एज ए पॉइंट लोड. कोप्लानर फोर्सेस में भी कॉन्करेंट, नॉन कॉन्करेंट, कॉन्करेंट भी हो सकती हैं, कॉन्करेंट एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं जो कॉन्करेंट फोर्सेस लाइक दिस 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 दीज आर द कॉन्करेंट. नॉन कॉन्करेंट एक प्लेन में अलग अलग, दीज आर द नॉन करंट फोर्सेस. देन आइदर कॉन्करेंट और नॉन करंट. सो फोर्थ का है सी आंसर, आइदर कॉन्करेंट और नॉन करंट. अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ट्रायंगल of forces, 3 concurrent forces will be in equilibrium. 3 concurrent forces will be in equilibrium. सही है. 3 concurrent forces can be represented by a triangle. ठीक है, each side being proportional to the force. So each 3 concurrent forces can be represented by a triangle, each side being proportional to the force, each side being proportional to the force. Okay, so this is also closest but the not correct one. If 3 forces acting upon by a particle represented in magnitude and direction by a side of a triangle, then
taken in order, they will be in equilibrium. This is the best correct answer. Okay, if three forces acting upon a particle are represented in magnitude and direction by a sides of a triangle taken in order. Correct, that is very important. Sides taken in order, they will be equilibrium. If three concurrent forces are in equilibrium, each force is proportional to the sine of angle between other two. So wrong. So C is the answer. Okay. 6. The simplest possible resultant of a coplanar force system is a single force, a uh, number 1, a single movement, B, a single force, C, a single force or a single movement, D, none of the above. सो 6 है, मेरे हिसाब से बेस्ट पॉसिबल आंसर होगा सी, अ सिंगल फोर्स और अ सिंगल मूवमेंट. या तो सिंगल फोर्स हो सकता है बेस्ट पॉसिबल रिजल्टेंट, या फिर सिंगल मूवमेंट हो सकता है. अगर कोई फोर्स नहीं दिया हुआ तो मूवमेंट भी रिजल्टेंट हो सकता है. सो आइदर सिंगल फोर्स और अ सिंगल मूवमेंट, बेस्ट पॉसिबल सिंपलेस्ट रिजल्टेंट लाइक. Okay, so I think C is the answer. You can consider it. 7. A force and a couple movement directed along a force equivalent to a system of forces is called a momentum, a torque, a wrench, or none of the above. So torque is a different and momentum is a different completely. A wrench is the closest one answer because a force and a couple movement directed along a force. So this is the, here you are applying a force and you are trying to rotate like this. So force, you are applying force and as well as couple. So like this is your force. So from here you can see like this is your bolt, like I show you the picture, and your wrench, you set up your wrench like this. Okay, so you set up your wrench like this and you apply force like this. So you are now if you see the effect of this force on this bolt, like, so you see the effect of this force can be resolved here, one force and one movement like this. So force and movement will only be produced in case of wrench, none of the above. Galat answer. So C is the answer. C is the answer. Then 8. State in which of the following action state in which of the following actions the applied force does not produce a movement. Pedaling by a cycle, definitely movement is there. Stretching a spring, B is the answer because stretching स्प्रिंग को खींचेंगे और छोड़ेंगे, उसमें कोई भी मूवमेंट उस नहीं होगा, टॉर्क होगा. ट्विस्टिंग स्ट्रेसेस आएंगे. ओपनिंग अ वाटर टैप को घुमाना होता है तो वो इस तरीके से घुमाना होता है. ऐसे ये वाटर टैप है, ऐसे पकड़ के हम लोग उसको रोटेट करते हैं लाइक दिस. सो दिस इज एंड ओके. ओपनिंग अ डोर को ओपन करने के लिए मूवमेंट प्रोड्यूस होता है. Okay, so now this is the 9. When resolving a force, question number 9, when resolving a force into its component, only one component is possible, only two components are possible, only three components are possible, infinite number of components are possible. So definitely D is the correct answer. A single force can give you the infinite number of components. Like this was the force. Okay, you can resolve this force like this one component and this second component. Not only enough components, some more components can also be created. This one more here, this one more here, but इन दोनों का और इनका इफेक्ट सेम होगा जितना कि इस फोर्स का हो रहा है. देन सम मोर फोर्स कैन आल्सो बी सीन लाइक दिस. सो थ्री फोर्सेस एंड थ्री फोर्सेस लाइक. तो ये है, कितने भी फोर्स बना सकते हैं हम लोग. एक फोर्स मैंने यहाँ पे ऐसा बना दिया, एक फोर्स यहाँ पे भी इस तरीके से बना दिया, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं लाइक दिस. तो इस तरीके से हम लोग इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स आर पॉसिबल. स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. टू फोर्सेस कैन प्रोड्यूस द सेम मूवमेंट अबाउट अ पॉइंट. ओके,
two forces can produce same moment about a point only when, so condition है, options है, only when the two forces are equal, only when the moment arms of the forces are equal, when two forces are concurrent, when the product of the force and moment arm are equal. So this is the correct answer. Two forces can produce the same moment about a point. So if this is the point, then this is one force, then this is second force. तो ये फोर्स इस वाले पॉइंट पे सेम मूवमेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे जितना ये इसका इस फोर्स का मूवमेंट यहाँ पे आ रहा है उतना ही इस फोर्स का मूवमेंट भी यहाँ पे आ रहा है, इन द केस ओनली व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड okay moment arm are equal. So this is the moment arm and this is the force. So this force and this moment arm is producing the same effect, then only okay will produce the same moment. So this was your MOS MCQ question set 1. Okay, and second, let me show you the second. We will go through it fast. Okay, as the most of the questions as read by us. Now see, the Manipal University Jaipur, Department of Civil Engineering, 18th August, the date, and set number 2 only. This is a set. Some questions are just exchange. In order to determine the effect of a force acting on a body, we must know its magnitude and direction of line along which it acts, its nature whether pull or push, point through it acts, all of the above. So D is the answer. सारी चीज़ें चाहिए, जैसा कि मैंने एक वीडियो में भी बताया आप लोगों को कि एक फोर्स को कम्प्लीटली डिफाइन करने के लिए वी नीड ऑल द थिंग्स, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, सेंस एंड लाइन ऑफ एक्शन. ओके, question number 2, two essential properties of a force are. So very essential properties, magnitude and sense, no. Sense and direction, no. Magnitude and direction is the very essential properties. So I think C is the best possible correct answer. Concurrent forces may be definitely coplanar, non coplanar. Concurrent forces तो कैसे भी हो सकते हैं, either coplanar, non coplanar. So C is the answer. कोलिनियर फोर्सेस आर कॉन्करेंट, कोप्लानर. कोलिनियर फोर्सेस जो कोलिनियर हैं, जो कि सेम लाइन ऑफ एक्शन को पास कर रहे हैं, सो कॉन्करेंट हो सकते हैं, कोप्लानर होंगे हो सकते हैं. ओके, एंड होंगे कॉन्करेंट, कोप्लानर, कॉन्करेंट, कोप्लानर, नन ऑफ द अबव. सो फोर्थ का है हमारा, फोर्थ का बी आंसर है. ओके, कोप्लानर. कोलिनियर फोर्सेस आर and concurrent, coplanar, and none of these. So collinear forces basically coplanar. Coplanar, collinear forces, collinear. Concurrent, coplanar. Coplanar is not the compulsory. Is the best possible answer according to me. Let me check this once. Okay, so but A is the best possible answer, A. Okay, you may mark the A as answer, because collinear forces are the forces passing in the same line. लेकिन अगर कोप्लानर है तो कॉन्करेंट एंड कोप्लानर, तो कोप्लानर इट मीन सेम प्लेन में है. सो दिस इज इन सेम प्लेन एंड कॉन्करेंट है. ओके, तो हो गई होगा. और कोप्लानर है, कॉन्करेंट एंड कोप्लानर. सो सी इज द आंसर करेक्ट. सी इज द बेस्ट पॉसिबल आंसर. ओके, so C you mark confidently, 4 and C. Okay, according to the principle of transmissibility of forces, the effect of force upon a body is maximum when it acts at the center of gravity of a body. गलत. According to principle of transmissibility of forces, the effect of force upon a body is maximum. Wrong.
same at every point in its line of action. So correct. Minimum when it acts at the center of gravity, okay, of the body, different at different points in its line of action. So B is the correct answer. Okay, according to this law, the force will remain same in the same line of action. Okay, the movement of a force about a line is a vector quantity, a scalar quantity. So we all know it's a vector quantity. तो फिफ्थ का आंसर है जो 5 का है वो बी है, क्लियर लिख देता हूँ, द मोमेंट। और ये है 6 का आंसर है जो वो ए है। इफ़ टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 6 न्यूटन एंड 8 न्यूटन आर एक्टिंग एट अ पॉइंट, द मैक्सिमम रिजल्टेंट पॉसिबल, so maximum resultant possible will be 14, definitely 14 will be the maximum possible resultant if both forces will act like this. If the resultant of concurrent forces is 0, then it implies that the two forces, then it implies that, okay, if the resultant of concurrent forces 0, concurrent forces का resultant 0, it implies that the two forces equal in magnitude, equal in magnitude and direction, equal in magnitude and opposite in direction. Okay, then D equal in magnitude and perpendicular to each other. So C is the best possible answer. If the resultant of concurrent force is 0, then it implies that two forces equal in magnitude and direction, equal in magnitude and opposite in direction, equal in magnitude and opposite in direction. So the resultant will be 0. So C is the answer. 8. The answer will be C. Okay. The magnitude of movement of a force about a point is equal to the product of the force and perpendicular distance between the magnitude of a force. Options है the magnitude of the force, the line of action of force, the sense of the force, the point of application of force. So 9 is the B is the answer. Okay, the line of action of force. So this is the line of action, like here you are going to take a movement, so we'll see later in case of movement. So this is the line of action of force. The magnitude of the moment is when a force is applied perpendicular to a lever is okay, maximum. So 10 is the answer. इज मैक्सिमम होगा अगर फोर्स परपेंडिकुलर लगेगा लीवर के तो मैक्सिमम होगा मैग्नीट्यूड, अगर इंक्लाइन लगेगा तो उसका फोर्स, तो उसका मूवमेंट का यहाँ पे जो मूवमेंट आएगा वो मिनिमम कम होता चलेगा। ओके, और जब बिल्कुल पैरेलल हो जाएगा तो 0 हो जाएगा मूवमेंट। दिस इज द सेट नंबर 3। ओके, इफ ऑल द मेंबर्स ऑफ फोर्सेस आर एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन द पार्टिकल। ओके, so we studied already this. As I told you, the most closest answer is if ठीक है, if a member of forces, ये क्वेश्चन कर चुके हैं आप लोग, और in order to determine the effect of forces acting on a body we must know, ये कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, 3 होगा कोप्लानर फोर्स मे बी कॉन्करेंट नॉन कॉन्करेंट, ये कर चुके हैं। कोलिनियर फोर्सेज आर, ये कर चुके हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी कर चुके हैं। द सिंपलेस्ट पॉसिबल रिजल्टेंट ऑफ, ये कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, कोप्लानर फोर्स सिस्टम इज अ सिंगल, ये कर चुके हैं। अ मूवमेंट ऑफ अ फोर्स अबाउट अ लाइन, ठीक है, ये कर चुके हैं। अ फोर्स इज अ कपल मूवमेंट हो गया। ठीक है, इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ कॉन्करेंट फोर्स इज 0, ठीक है, ठीक है, व्हेन द रिजॉल्विंग फोर्सेस, ये हो गए सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी। So there is not more questions. Okay, bye guys, thanks for watching and keep me watching, and like this video and share this also in your group, so that everyone can get the solution of the previous year this paper.